So now I will talk about the beta decay and the concept of neutrino, how the concept of neutrino have been evolved. So various experiments showed that in beta decay a radioactive nucleus decays to another nucleus of almost same mass, slightly lighter. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी ये, ठीक है, विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, और you can call it as a electron. So let us try to understand it, right? So say X, it transforms into Y with the emission of electron. Now what should be the charge? Charge represents what? Charge represents number of protons present in it, so it is the Z. और यहाँ पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? -1. So that means to maintain the neutrality, what should happen? It should be Z+1. It should be Z+1, and the mass number will remain the same almost. So mass number will not change, but nuclear charge will changes. So it is increased by 1 with the emission of electron. That's what should happen. And let us have a look at certain examples of beta decay. Potassium transform into calcium. ये क्या है? It's a mass number and this is the charge on the nucleus, right? Another example is copper 2964. It transform into zinc 3064 with the emission of electron. And another example is it's a tritium 1H3, and it transform into helium 2He3 plus this. That's what will happen. And according to conservation of energy, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग करते हो, तो वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल आल्सो. अगर ये रिएक्शन हो रहा है देन व्हाट शुड बी द एनर्जी. अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल शुड बी, थ्योरेटिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऑन द बेसिस ऑफ this, the energy must be equal to,
मास ऑफ एक्स इसका स्क्वायर माइनस ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको मिल जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्लस m² ओवर 2ma मीन्स mx just a minute, let me check it. So it is not 2mx into c square, right? This should be the energy, and as we know that this value is constant, this value is also constant, everything will be constant. So that means जो beta particle emit होगा according to theoretically that its value should be constant. Energy of beta particle, it's a theoretical value, it should be constant, right? That's what should happen. But this is the experimental observation. Beta decay spectrum of the tritium, I have taken this from book by Griffith, पार्टिकल फिजिक्स की बुक है बाय ग्रिफिथ. तो उसमें ये ग्राफ हमें देखने को मिल रहा. सो दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, एक तो एनर्जी ये आ रही थी, मैक्सिमम एनर्जी जो पार्टिकल की आ रही, इसके आसपास एनर्जी आनी चाहिए थी, बट ये एनर्जी कितनी आ रही थी जो हमने थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट की उससे भी काफ़ी कम. ये वैल्यू कितनी आ रही थी, मैक्सिमम जो एनर्जी आ रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहाँ पे आ रही थी, वो यहाँ पे आ रही थी. और ये एनर्जी कितनी थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मेरे पास एनर्जी मिल रही थी, मैक्सिमम जो बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, ये कितनी थी, ये ई मैक्सिमम जो थी, इट इज द 1/3 ऑफ द जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड थी. ये एनर्जी कितनी आई जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आ रही थी, इट इज द 1/3 जो मोस्टली पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, उनकी एनर्जी कितनी थी, इट इज द 1/3 ऑफ द एनर्जी विच इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली. वो 2/3 एनर्जी कहां गई,
अगर तो मोस्टली पार्टिकल्स की एनर्जी इसके आसपास आती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये एनर्जी भी कम आ रही थी, इट इज द 1/3. सो वेयर इज द लॉस्ट एनर्जी? जो एनर्जी लॉस्ट हो गई वो कहाँ गई? मतलब 2/3 एनर्जी इज लॉस्ट. तो दो पॉसिबिलिटीज थी, आइदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड. एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी? वन पॉसिबिलिटी इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड. एक पॉसिबिलिटी क्या थी? दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड. पहली पॉसिबिलिटी. दूसरी, there is emission of some new particle, emission of new particle, and which we are not able to detect. And this particle, this carries this 2/3 energy. ये प्रपोज किया गया. एक और प्रॉब्लम थी. एक तो ये डिस्क्रिपेंसी थी दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड, मीन्स वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बीटा डीके प्रॉपरली. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज बीन वायलेटेड. एक देयर इज अनदर मोर रीजन. व्हाट वाज दैट? अनदर प्रॉब्लम विद द एंगुलर मोमेंटम. Angular momentum means I am talking about the spin, right? So let us understand it by considering an example. So it is the parent nuclei and it is the daughter nuclei, and this is the electron will be emitted here. Suppose यहाँ पे A जो था, A is even, suppose कर रहा हूँ मैं. अगर A even होगा, what does it mean? It means that the spin of that nuclei is integral. अगर odd होगा तो half integral होगी. So just मैंने assume किया, that means what it means? It means that spin of the nuclei is integral. इसकी स्पिन इंटीग्रल है बिकॉज ए इज इवन, बट ए विल नॉट चेंज, ए विल रिमेन्स द सेम. सो दैट मीन्स इट्स स्पिन इज ऑल्सो इंटीग्रल, बट इट इज ए फर्मियन. है फर्मियन, तो इसकी स्पिन क्या होगी? हाफ. इज इट पॉसिबल दैट इंटीग्रल स्पिन इज इक्वल टू सम अनदर इंटीग्रल स्पिन plus half? Is it possible? No, it's not possible. So that means there is a violation of another law, law of angular momentum. दोनों के दोनों लॉ वायलेट हो गए. Means angular momentum is also not conserved. So keeping these problems in mind, Poly came with some suggestion. So what is the Poly solution? Suggestion. He suggested another type of particle. Another type of particle which was emitted along with the electron, which carries missing energy,
missing energy, which carries missing energy, and it must be electrically neutral. It must be electrically neutral to conserve charge. तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन लॉज भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे थे नई पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने में, एक थॉट डेवलप करने में. बिकॉज वंस थॉट हैव बीन डेवलप्ड, व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिस्कवरिंग दैट थिंग, तो थॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. एंड पॉली proposed to call it neutron. But later on, because neutron is later on discovered as a neutral particle later on, and then we will not calling it as a neutron, we call it as a neutrino. We call it as a neutrino, right? So this is neutron is not sustained name. It has been changed. So later on, it was observed that this new particle is extremely light, and Fermi called it neutrino. Fermi called it neutrino, but later on we call it as antineutrino. Antineutrino, antiparticle of neutrino. And the concept of antiparticle was given by Dirac, right? The concept of antiparticle was given by Dirac while he was solving a relativistic Schrodinger wave equation. So in modern terminology, how do we write down the reaction that neutron transform into a proton with the emission of beta particle along with the antineutrino? So this is known as antineutrino. So this is the complete reaction. That's what will happen. Clear? Okay. And neutrino is also a lepton as electron. Neutrino is also a lepton as electron. And lepton number is denoted by lepton number, it is represented by lepton number. So lepton number क्या आएगा इसके लिए? Lepton number is also a type of a quantum number. जैसे हम हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम में क्वांटम नंबर्स की बात करें, इट्स सेम टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स. ठीक है. सो लेप्टॉन नंबर आल्सो शुड बी कंजर्व्ड. सो लेप्टॉन नंबर L इज इक्वल टू 1 फॉर इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो पार्टिकल लेप्टॉन्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू ये होगी. तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए, सॉरी न्यूट्रिनो के लिए लेप्टॉन नंबर 1 आएगा. जो इसके एंटी पार्टिकल हैं उनके लिए लेप्टॉन नंबर -1 आता है. सो फॉर पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो,
और जो पार्टिकल लेप्टॉन्स नहीं है उसके लिए L की वैल्यू क्या आएगी, 0. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, we will also talk about conservation of lepton. Law of conservation of lepton number. So let us talk about the beta decay. Beta decay is also two types, beta minus decay and beta plus decay. So what will happen in this case? Neutron transform into a proton plus emission of electron and anti-neutrino, and here protons transform into a neutron with the emission of E positive plus neutrino. Clear? So neutron is not a lepton, so L will be 0. For this L will also be 0. Because proton is also not a, and here it is a lepton number is +1 for this one for electron. So एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या हो जाएगा, -1. सो लेप्टॉन नंबर क्या हो गया, कंजर्व हो गया, इधर भी 0 है और इस साइड भी 0 है. एंड सिमिलरली विद इट, सो लेप्टॉन नंबर इज कंजर्व्ड इन दिस केस. क्लियर? देन another thing, it's a basically theoretical concept. अब समस्या क्या आ गई, अगली समस्या क्या थी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ टू डिटेक्ट. कहीं ऐसा तो नहीं assumption ही हमारी, आर दे रियली एग्जिस्ट, आर वी एबल टू डिटेक्ट. अब प्रॉब्लम क्या थी, दे आर ऑलमोस्ट 0 मास, मास नहीं है. दूसरी चीज, चार्ज भी नहीं है. इफ दे आर चार्ज्ड पार्टिकल देन दे आर वेरी इजीली डिटेक्टेबल. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा जा सकता था, बट ना तो चार्ज्ड पार्टिकल है ना मास है. हाउ टू डिटेक्ट दोज पार्टिकल्स? सो जीरो चार्ज एंड ऑलमोस्ट मास, zero charge and almost zero rest mass make the neutrino most difficult particle to be detected experimentally. Then to physicists Cohen and Rhines, these two people, they performed an experiment in 1956 to detect neutrino. What they did, and neutrino was proposed by Pauli. कब? 1930 में. After 26 years we are able to successfully detect neutrino or anti-neutrino, whatever you want to call. So what they did, they set up a large tank of water and watched for inverse beta decay reaction.
what is inverse beta decay reaction? So that means if neutrinos are existing there, and if neutrinos are existing there in nature, then they will interact with what? They will interact with the proton and gives us a neutron plus positron. If we are able to detect these two particles, then we confirm that they have been created in nature. So either they have to go into the space, the atmosphere, or there is another possibility. सोर्स क्या है हमारे पास? न्यूट्रिनो का सोर्स क्या हो सकता है? न्यूट्रिनो का सोर्स वहां हो सकता है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो. So that means they performed this experiment near the nuclear reactor, right? So they performed means there is a nuclear reactor and large flux of particles are coming out of it, and that large flux of particles, they are passed through the tank of water. And what will happen? The anti-neutrino coming from the reactor, it interacts with the proton. और प्रोटॉन कहाँ था? प्रोटॉन पानी के साथ जब रेडिएशन इंटरेक्ट कर रही थी तो पानी आयनाइज हो गया, तो उसमें से कुछ हाइड्रोजन ने प्रोटॉन दिया हमें. हाइड्रोजन जब एटम स्प्लिट हुआ तो ये एंटी न्यूट्रिनो वेट इट इंटरेक्ट्स विद द प्रोटॉन एंड दे हैव ऑब्जर्व्ड न्यूट्रॉन एंड positron. In this way, they confirmed the existence of anti-neutrino. Clear? So this is a very interesting thing. And Clyde, he died in 1974 at the age of 54 years. 54 years में he died, and in 1995 Frederick Prince was honored with the Nobel Prize, not for the discovery of this, but for his work on the neutrino physics. So this is a brief theory of what? Beta decay and discovery of neutrino. So I think that's all for this lecture.